उमरपाड़ा के बिलवाड़ और झरपण गांव में बीसीयू प्लांट का उद्घाटन। सूरत जिले के उमरपाड़ा तालुका के बिलवाड़ और झरपण गांव में दूध मंडली के नए बीसीयू प्लांट का उद्घाटन विधायक गणपत सिंह वसावा के हाथों किया गया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि नए बीसीयू प्लांट से दूध के संग्रहण और गुणवत्ता बनाए रखने में बेहतर सुविधा मिलेगी, जिसका सीधा लाभ दूध उत्पादक पशुपालकों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उत्पादन और सहकारी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में उमरपाड़ा भाजपा संगठन के पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि, सुमुल डेयरी के अधिकारी कर्मचारी, दूध मंडली के अध्यक्ष, मंत्री और सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। दूध मंडली में अनेक झगड़ाओ चाले, दर पगारे बाथे पड़े, एक ने मारे ने तूफान पोलीस स्टेशन ने जेल में राखवा पड़े, पाछा छोड़ावा पड़े। तो कंटाळी ने मैं वहीवटदार मुकावी दीधो। तो तमे विचार करो, 6 महीना वहीवटदार रह्यो तो वहीवट केवो सुधर्यो, 4 लाख रुपया तो बेलेंस थई गयो अने दर महीनानी रेग्युलर तारीखे पगार थयो। तो हवे गामवाळा कहेवा एवा के साहेब आ कमिटी ने बदले एवुं थाय के कायम वहीवटदार ज रहे। जो 6 महीना में 4 लाख रुपया बेलेंस थई जतुं होय, अमारे एम के कमिटी बेहाडवानी इच्छा नथी, एवुं गामवाळा रजूआत करवा आव्या। એટલે તમે મારે એવા કોઈ વહીવટદાર બેસાડવા નથી, પણ વહીવટ સારો કરજો, પારદર્શક કરજો, જેથી કરીને સભાસદો વિશ્વાસ મૂકે અને દૂધ 2000 લીટરનું થાય। કેમ કે બીસીઓ જે ઘણા વર્ષોથી આપણી માંગણી હતી, એ આપણા લોકલાડીલા સાહેબ ગણપતભાઈ વસાવા સાહેબે સુમોલાને સરકારમાં એમણે રજૂઆત કરતા આપણને બીસીઓ મંજૂર થયો છે। તો સાહેબ માટે એકવાર જોરદાર તાલીઓ વધારીએ। બીસીઓ એટલે શું? બલ્ક ચિલિંગ યુનિટ, એટલે કે આપણું દૂધ 2 થી 3 કલાકની અંદર 4% સેલ્સિયસ જેટલું ઠંડુ કરી નાખે, જેનાથી આપણું દૂધ બગડતું નથી। અને જ્યારે ઉનાળામાં ગરમી હોય ત્યારે ફાટી જાય, બગડી જાય, જ્યારે એનું તાપમાન ઊંચું જતું હોય તો બેક્ટેરિયા વધી જાય, તો આપણું દૂધ બગડી જતું હોય। તો આજે આપણું દૂધ ઠંડુ થાય છે અને સારો ભાવ મળે। જ્યારે ખાટું થઈ જતું, વર્ષો પહેલા કેનોમાં જતું, તો દૂધનો ભાવ મળતો ન હતો, પણ આજે બીસીઓ આવવાથી બિલવાણ ગામ, નાની બિલવાણ, મોટી બિલવાણ, आजूबाजूना जे फड़ियामांथी दूध आवे छे। जीएम न्यूज़ के लिए निलय चौहान, तालुका मांगरोल, जिला सूरत।